Go for it. Go, Souradeep. Yes. Thank you, sir. Thank you. So, just a second, give me a second, please, all of you. Was some issue with the GoTo webinar? We could not have the session there. So, right now we are conducting. Thanks to Vivek sir for this. And we'll directly move to the scenario. Overall, though 30 minutes have gone, but still, from the today's perspective, where the market is, actually there is not a great deal that we can infer from the present situation. See, I am not going directly into the Russia Ukraine details because all of us know that through the media. Let us see how the market can behave. See, if the situation keep on escalating, as we can see, the Nifty, there was a huge gap down. And see, this fall is very different from the fall that we have during the COVID crisis. Okay. So during the COVID crisis, we knew that the COVID won't go away. So this was much linear fall, okay, that we had. But this fall is very noisy fall, right? See, this day you see the price action of last 5 days. This day was doji, that is fair enough here, but then a huge gap down, and then a very strong pullback. Next day, gap up, come down. Next day, huge gap down. Next day, huge gap up. So, 400-500 points gap up and gap downs are right now happening on a daily basis. Okay, or 200-300 points. Let us look at the VIX, India VIX volatility, and I am going to the monthly chart. So, if I go to the monthly chart, I will see that we have again hit 35 to 38 is kind of a peak, except this COVID one where we went up to, I think, what was the COVID peak? 86. Okay. Now, in this kind of VIX, it is very difficult to trade because you cannot buy options because inevitably options will lose value next day if there is a even 200-300 point gap up in Nifty. But if there is a very big thing which is happening very often, then you cannot sell option also because there is always a risk that you end up cutting with the big losses because your 90 rupees option can become 900 rupees if there is a 500-600 point gap up or gap down in Nifty. So this is not a ideal situation where someone should look to trade anything. Even for any stocks, if I go to the stocks are also behaving very in a weird fashion. Okay. Now, this is something that is new to everybody, even to me also. I have not seen such a large scale war in my career of 12 years. None of us have seen. COVID was also new, but COVID was still much more certain that it won't get resolved by the day end. But this is something which we are all of us are uh, in facing for the lifetime in our career. And the thing that we have also to understand is that if we are talking about the oil embargo, okay, so I will show you the Brent chart in the when oil embargo happened. Okay, Brent crude oil, I'm going. Now I'm going to the monthly chart. Okay, I have to go back to the 1973 to show you what I want to show. See, at that time, crude prices were $3. Okay, $3, 1973. Okay. But as soon as the oil embargo happened, crude oil went to $11 within 2, 3, or 4 months. So 300% jump in oil. If such a thing happens in today's terms, a $70 oil become 200. And in past also, whenever there has been oil shocks, see from $14 within a year, $37. From $14 again in 1990s, $41. Again in oil shock of this 1999,
So $11 to $34. So 3 times it can easily become in such kind of a crunch situation. So oil was generally trading at 70, 80. So if there are widespread uh, sanction and everything, oil can go to 200 to 250 also for a short period of time. It won't last. See, most of the times this has generally been followed with a big sell-off also. But for 1 or 2 months, if there is a huge escalation in the case of war, we can see any level of oil. And if oil goes to 250, 300, you can understand what can happen to the market also. So it is very almost impossible for anybody to actually say where the market can go. Okay. Now, one more important thing, it won't last. Yesterday, when I was having this session, I shared it with my TMP members also. So this post, all were Putin, Putin, everywhere Putin. So this was the thing that I shared, that see 30 to 800 was very important in Dow Jones. And I mentioned, if you see here, that intraday breach only on the if it closes below this, market can fall to 10 more percent at least. But what happened in the night is that you can see there was a very big pullback. There is a green candle. Now again a green candle. See, today Russia has told that they are willing to talk if Ukraine decides to put down arms. They're willing to talk. So in that case, you can see a very big rally also with a very big, see, Dow Jones chart is very much more. If you look at Dow Jones chart is much more rhythmic, because this is a futures chart, trades for 23 hours. Nifty chart on the contrary, you will find very, because it trades only for 6 hours a day, it is not a continuous contract. You can see huge amount of gap ups and gap down in the case of Nifty or any stock. So it is almost impossible to understand. So my point is, don't trade at this point of time. See, there is no point losing a lot of money. There is no point trading. If you want to trade, you see, I have given you a crude oil strategy. See, even in this market also, see the kind of uh, entries that you are getting. Almost entry at the bottom, almost entry at the top. Here, buy trade came successful. 1 or 2 trade would go negative also, but the kind of entries that my strategy is giving, you can see beautiful strategy. If you want trade crude oil, in this strategy is based on RSI, this and this. So 0.75 0.75% is the target, and 0.55% is the stop loss. Generally, the success rate is pretty high, as you can see. Use this. But for stocks in, don't try to trade anything, because you don't know what is going to happen overnight. So if bearishness persists, 15,726, and one more important thing, we are closely approaching a time when the UP election is coming to an end. Now, if BJP wins UP and retains Goa and another state is Uttarakhand, market likely to move above. And if the things are not very volatile in the geopolitics, and market likely to move above 17,500. If it does not happen, BJP loses UP, I expect market to soon visit 14,500 kind of a level, or 15,000, and within 6 months, possibly 12,000 kind of a level. So very crucial thing. Now, all of you remember, let me show my tweet also here. Just a second. Okay. So this tweet I was talking about.
So I had on 14th of September, the 14th of January, asked all of you to buy this one. Okay, this one. So 14th of February, I asked you to buy this one at, I will show you just a second. If I go to NSC, if I search Nifty, derivatives, okay. So index option, I'm going, and expiry date 31st March, because I asked all of you to by 31st March put based, because UP election results is on 10th March. Okay, so all of you, if you clearly remember this, that I have asked you to buy this put, 17,000 put. I'm trying to find, just a second. Going to the option chain. Yes. So this 17,000 put, I had asked you to buy, and again I have to do 31st March. Sorry, 31st March. Yeah, just a second. Right now I am in the correct place. So 17,500 put, I have asked you to buy at 230. It went to 1400 yesterday also, and and 17,000 put, when it was 270, I asked you to buy. It went to 1000 yesterday. Right now 639. So have this, and possibly, given the situation, you can also roll over to 28th April also, given the geopolitical situation, if it is not resolving. So see, there you saw the price of 70,500, 952. It is 1035. Okay, and 31st March one is 968. So only 70-80 rupees to roll over. So it is better to roll over right now, because what happens is that if the geopolitical situation persists, this will remain hedge for your portfolio. I am not saying fresh buy, because this has already risen. You should have bought 1 month back if you have already bought, or if you are already having these puts. But it is better to roll over given the geopolitical situation. That is what I think, because the rollover cost is only 3-4 thousand. So you have one extra month of protection for your portfolio. For every 8 lakh, I asked you to buy only 230 rupees. I asked you to buy, that was coming only 1.25% of every 8 lakh portfolio. This was unexpected Ukraine scenario, but this came in between, and this is right now hedging the market very much. Otherwise, today in live session also, today was TMP live session also, I told you everybody not to trade. I'm telling all of you also not to trade. Only if you want to trade, trade the crude oil, that I have given you the strategy. Otherwise, other things you cannot trade. See, already US government bond yield, you can see, is at 2%. Okay, because the inflation is high, because oil had hit $100 yesterday. And if you can see, the dollar index had also in fear had gone to 97, 98. Okay. If you want to see how gold behave, see, this is abnormal. You cannot trade. And right, see, gold yesterday went to 1974. Right now it is 1891. Very abnormal situation. Okay. Nickel, because Russia is also a major producer of nickel also. See, nickel went from 1850 to, and I told many a times about the nickel. I have posted here many a times about nickel. Okay, so in our commodity club, I've many a times written about nickel. So
I will show you here commodity and currency. So many a times he had been posting about nickel. In past also had posted about nickel. You can see in past also had posted about nickel when it was 1700. The 2000 is on the cards. Yesterday it went, and I did not know the geopolitical situation at that point of time. Please understand. So it is nickel went up there, but these are not tradable. These were yesterday's move was not tradable. Okay, and now anything can happen. See, only thing that I can tell you is that for Nifty, if Nifty trades above 16,800, then it again becomes bullish and still have the hedge as long as geopolitical tension is there. But otherwise, no trade. In the TMP session also today, I advise this no trade, because it is not possible through anything, through options, through stocks, not anything. Stocks are hitting unrealistic level based on the what is happening in this, because the raw material cost can go very high. The last time when this happened between Russia and Ukraine, the alumina prices went up almost 35% in 2 days. Okay, so things can what was the price when he recommended? He's asking. I recommended. So you can see this in the tweet. So when this was at 230, that time I recommended. Okay. And when it was at 270, that time I recommended. So crude oil strategy is this one, sir. I showed you this crude oil strategy. If you go to the Elearnmarkets.com website, go to the webinar. And in the webinar section, the hourly strategy that I had taught here, working very beautifully. You can apply this. It is a broad webinar, but that strategy particularly is the technical strategy that I'm talking about is working very well. Okay. So not a lot of things that I can talk about, just handing over to Vivek sir here at this point. I'm sorry for the inconvenience that was caused earlier. Handing over to Vivek sir. Okay, Again, thank you. Thank you. Good evening, everyone. sir, please tell. Thank you. I hope I am audible. Yes, sir. Okay, thank you so much, Souradeep. You are good as usual. So, okay, guys, this is one of those days when some tech glitch happened and we have to live with it. So, actually, I don't have much to talk about. In fact, मैंने Monday को जो market Monday नहीं परसों जो market में की fall आया था, तो I have also discussed this in my YouTube channel कि where exactly market is, क्या करना है. तो एक चीज तो clear है कि market के अंदर में अभी the way things are, unless market close above 200-day moving average, which is 16,725. इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं क्लोज करेगा, मैं किसी भी तरह का मोमेंटम बाइंग नहीं करूंगा. And today was the day when there was so much of temptation to add a lot of things. Look at these stocks, especially the stocks which I am following. So many stocks were showing phenomenal movements, and I was tempted to get into those stocks, but no, I will not. I will not get into these stocks because जब तक Nifty 200 DMA के नीचे है, तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा. Okay, I have already squared up a lot of my trade positions. बहुत पहले से हम लोग बात कर रहे हैं और इसमें कोई rocket science वाली बात नहीं है. We have been talking about this character dollar, and I always tell this कि ये बहुत कुछ बताता है. मतलब हम लोग ये war, in fact क्या आपको पता है कि US के अंदर में US बोलो रशिया ने अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा लिया है पिछले 2 क्वार्टर से. सो इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि हमको मार्केट नहीं बताता है कि कुछ गड़बड़ी है. डॉलर हमको लाउडली बोल रहा था कुछ गड़बड़ी है, एंड
वी वर ऑलवेज कंजर्वेटिव, लग रहा था कि मार्केट इस रेंज को तो तोड़ेगा तो एक पिटाई पड़ेगी मार्केट में, और जैसे इस रेंज को मार्केट तोड़ा 16,900 को, अच्छी खासी पिटाई पड़ी है मार्केट में। तो एंड यू नो द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वाज द स्मॉल कैप और मिड कैप, द वे दे हैव फॉलन इज क्वाइट क्रेजी। तो अभी मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ बाय नहीं करेंगे, चाहे जितना भी हमको टेम्पटेशन मिले। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनके लॉस लग गए हैं। अच्छा, ये माइंडसेट वाली बात है कि लॉस तो सबके लगेंगे, मेरे भी लगे हैं, सबके लगे, इसमें कोई नया नहीं हुआ है आपके साथ में। पॉइंट इज नॉट कि जो लॉस लग गया है, बिकॉज दिस इज एन अनयूजुअल इवेंट जिसके कारण लॉस हुआ है। पॉइंट इज कि यहां से अब आप अपने आप को कैसे बिल्ड करते हैं। मार्च 2020 में भी लॉस लगे थे, बट उसके बाद जब हम अपने आप को बिल्ड किए थे तो प्रॉफिट इज फार फार हायर देन द प्रॉब्ली द लॉस व्हिच वी इनकर्ड। तो सिमिलरली अगर लॉस लग गए हैं तो हताश नहीं होना है। वी हैव टू कंटिन्यू विथ व्हाट वी आर डूइंग, इज फॉलो द प्रोसेस एंड वर्क इन द मार्केट एज पर द प्रोसेस। और ये जो स्टॉकेज क्लब है, टीएमपी है, जितना भी एक्सरसाइज हम लोग सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ऑल अराइव एट द फाइनल प्रोसेस फॉर आवरसेल्फ, चाहे वो आरएस है, चाहे क्रूड का स्ट्रेटेजी है, कुछ भी। अच्छा, एक और एडवांटेज क्या है, आप जब मल्टी एसेट सीखते हैं तो देखिए, इक्विटी सपोज कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, बट क्रूड ऑयल के अंदर में अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मिल रही है, वहां डायरेक्शन है, तो आप अपने कैपिटल को वहां यूज कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। कभी ऐसा होगा कि कुछ भी नहीं काम करेगा, करेंसी काम करेगा, तो प्रॉब्लम करेंसी में काम कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई कॉन्स्टेंटली आई एम टेलिंग पीपल कि आप लोग मल्टी एसेट ट्रेडर बनने का एस्पिरेशन रखिए। आप खाली इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं या XYZ कर रहे हैं, इससे बेटर है अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ट्रेडर वाला या किसी भी तरह का उस तरह का मार्केट पार्टिसिपेशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी एसेट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या बताऊं, एक्चुअली वो वीडियो में मैंने बहुत कुछ बता दिया था, तो आई होप यू गाइस सी दैट वीडियो। एंड एक और बात बोलूं, थोड़ी पॉजिटिव बात बोलूं, कि ये सब तो चलता रहेगा, कोई पता नहीं है इसका। देखिए, वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने वाला है, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन फॉर द न्यू वर्ल्ड टू हैव अ वॉर। अब सीधा वर्ल्ड वॉर होगा मेटावर्स में, वहीं सब लड़ेंगे, फिजिकल में अभी कोई नहीं लड़ना चाहता है। तो दिस विल डेफिनेटली रिजॉल्व, ये मान के रखिए। देखिए, वी ऑल आर ऑप्टिमिस्टिक पीपल, हाँ, तो मानना तो पड़ेगा कि ये रिजॉल्व होगा। तो रिजॉल्व तो होना है ये, क्योंकि अमेरिका भी बोल दिया कि बॉस मैं फिजिकल लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, हाँ मैं सैंक्शन कर दूंगा। रशिया क्या बोलता है, कर लो जो सैंक्शन करना है। तो बेसिकली ये रिजॉल्व हो जाएगा। यहां से मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम रैली आने वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स, अब इन लोग की हिम्मत नहीं होगी इंटरेस्ट रेट्स को जल्दी से बढ़ाने की, राइट। अब ये लोग वापस से और चाहेंगे कि अरे भैया कोई भी ऐसा डिसीजन ना लो जिससे वापस से बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी आए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत बड़ा मोमेंटम रैली आने वाला है। तो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ, डोंट गेट एक्साइटेड बाय दिस 8, 9, 10% मूव व्हिच इज हैपनिंग, बिकॉज दीज आर आवर रिकवरी मूव्स। इसमें हम लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। यू नीड टू बी अ वेरी बोल्ड पर्सन टू बाय एट ए लोअर लेवल्स व्हेन दीज मूव्स आर हैपनिंग। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक एक्शंस बहुत हैं और होंगे ही। जैसे मेटल्स है तो स्ट्रांग है, बैंक्स हैं तो अब स्ट्रांग है, ऑटो है तो वो स्ट्रांग है। तो वो नए लीडर्स आइडेंटिफाई करने का काम अब हम लोग का है। और जैसे ही निफ्टी 200 डीएमए के ऊपर चाल चलना चालू कर दे, बस आप भी चालू हो जाइएगा, है ना। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ जादू क्या है 200 डीएमए का। ये निफ्टी का ये वीकली चार्ट है और ये डेली चार्ट है। ओके, लास्ट निफ्टी 200 डीएमए कब क्रॉस किया था, देखो यहाँ पे 22 सितंबर 2020 को क्रॉस किया था। उस समय 10,800 था और उसके बाद एक बार भी ये नीचे नहीं आया। तो ये अब की बार वापस से जब इसको ऊपर जाएगा तो फिर आपको बहुत अच्छा रैली मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड, एंड वॉट एवर यू हैव लॉस्ट, मोस्ट लाइकली जो 2-3 साल से मार्केट में उनका कमाई का कुछ परसेंटेज चला गया, मेरा भी चला गया, और आप लेट आए हैं तो थोड़ा ज्यादा चला गया होगा आपका, बट नॉट टू वरी, यहीं पर हम लोग सबको, या मार्केट भी यहीं पर ही है। तो आप बस डटे रहिए। ऑलराइट, और दूसरी बात यह है कि स्टॉकेज सोशल के अंदर में हमने एक नया रूम ऐड कर दिया, एक्सपर्ट्स क्लब। और यहाँ पर अब हम बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ऐड कर रहे हैं, फिल्टर करके, हर किसी को नहीं ऐड करेंगे।
फिल्टर करके अच्छे लोगों को ऐड कर रहे हैं, जिनको हमने मैंडेट दिया है कि आप ना सीधा ट्रेड आइडियाज दीजिए, ठीक है। तो जनरली मैं अवॉइड करता हूं कि मैं आपको ट्रेड आइडियाज दूं, मैं जनरली चाहता हूं कि आप खुद तैयार हो जाए, बट मुझे अब लग रहा है कि तैयारी के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत दे भी देना चाहिए स्टॉक आइडियाज। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं, आशीष कयाल, करण शर्मा, जो कि हमारे यहाँ पर काफी साल से जुड़े हुए हैं, ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट, तो इनके जो भी बातें आ रही है ना, प्लीज रीड, और आपको कुछ भी कमेंट इनमें देना हो तो आप कमेंट दीजिए और इंगेज हुई। हमारी टीम के साथ आप जैसे इंगेज होते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काउंटर क्वेश्चंस पूछते हैं, जिससे आप और बेटर तैयार होते हैं, तो इनको भी हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं, चाहे वो आशीष कयाल है, चाहे ज्योति जी है, और इन सब से हमने कमिटमेंट लिया है, हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं इनके ऊपर, ताकि ये कॉन्स्टेंटली हमको रेलिवेंट फीड देते जाएं। और भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, प्रकाश गाबा साहब ऐड हुए हैं, और भी लोग हम ऐड कर रहे हैं। उनका मैंडेट यही है कि मेरे जितने भी क्लब मेंबर्स हैं उनको आप जितना वैल्यू दे सकते हैं दीजिए, ताकि ये जो कम्युनिटी है हमने डेवलप की है, ये मार्केट में आने वाले दिनों में अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा तो वी शुड बी द फर्स्ट वन टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो सो आई डोंट हैव मच टू ऐड टुडे, यूट्यूब वीडियो में मैंने बता दिया है, एंड बी प्रिपेयर फॉर अ गुड मार्केट अहेड। और आपको कहीं पर भी लगता हो कि यू नीड मी, प्लीज क्लब मेंबर्स, यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ सपोर्ट टीम टू कनेक्ट विद मी। मैंने ये बोला हुआ है कि मैं 10 मिनट क्लब मेंबर लोग से बात करता हूँ, एवरी डे आई हैव कॉन्वर्जेशन विद मेनी मेंबर्स। तो अगर आपको लगता हो कि आपको बात करनी है मुझसे for anything related to you, feel free to connect with me via the support team. And TMP members, आप तो खैर I'm already there in your WhatsApp group, so you can connect with me. But be positive, all I can say, ये सब चलता रहेगा मार्केट में, और हमको बस एक ही काम करना, ऑप्टिमिज्म के साथ में, राइट प्रोसेस, राइट स्ट्रैटेजी के साथ में बस काम करते रहना। Alright, so thank you so much for joining this in the last moment change. I hope you found the discussion useful. Souradeep has been very, very good in what he is doing, and I feel very happy कि आप लोगों ने एक you always visit, ये attend करते हैं आप every Friday, and we'll keep on adding more value to this entire journey of learning and earning for market. ठीक है, और कुछ भी चाहिए तो please do feel comfortable in connecting with me. All right, thank you guys. Thank you for your time, and we will anyways post this video in the YouTube channel. ठीक है जी। एक बात मैं बोलूं, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं वीडियो देख पा रहा हूँ कुछ लोगों का, और कुछ लोग है ना आराम से बेड पे लेट के सुन रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि बातें उनको इतनी अच्छी लगती है कि वो आराम से बेड पे लेटे लेटे भी सुन रहे हैं बातों को। तो अच्छा लग रहा है देख के आप लोगों को। चलिए देखते हैं, गो टू मीटिंग से शिफ्ट करें जूम में। जूम में फायदा ये होता है कि आई कैन सी ऑल ऑफ यू, एंड सम पीपल आर वॉकिंग। गौतम जी वॉक कर रहे, नहीं गौतम जी तो ऑफिस में ही है। कुछ लोग, अनिल जी हेलो, कैसे हैं? आशीष जी कैसे हैं? ओके, सो गाइज अभी लेट्स सुनील जी भी लेटे हुए हैं, सुनील जैन जी। गुड टू सी यू गाइज, एंड फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। अगर आपको लगता हो कहीं आप अटके हैं, अगर कहीं भी नेगेटिविटी हो, वरुण जी की डॉटर आई है, वरुण जी हटा रहे हैं उसको। बुलाइए उनको, वरुण जी। हेलो, yeah, so we'll have some kind of one day we will probably have club meet with family members also, just as a waiver. I'll also call my family. चलिए, थैंक यू। सो दैट आई मीन जस्ट बी पॉजिटिव, आई वुड से। देखिए टफ टाइम आते हैं, पैसे लगते हैं तो बहुत दुख होता है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लगे मेरे भी है, लेकिन द रियल आर्ट इज to get out of that negativity and become positive again and wait for the new market which will come. ऐसा नहीं होता है कि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, लेके जाएगा। अनसर्टेन इवेंट्स आते रहते हैं, बट वी विल इमर्ज एज विनर्स। यस, दैट्स, से दिस टू योरसेल्फ, आई विल बी विनर, आई विल बी विनर। चलिए, thank you, and feel free to connect with me. Raj, Mr. Raj, your guitar is there, and one day you have to play the guitar for us, huh? You can't just show the guitar, one day you have to play it for us. All right, guys, thank you. Take care and have a great weekend. Relax on the weekend, and let's prepare for the market on Monday. Bye-bye.
Take care.